से उतरे और वापस पटरी पे चढ़ जाए उस 12 किलोमीटर पैच के बाद में, ऐसा तो संभव नहीं है। ट्रेन तो नीचे उतर के वापस डाइवर्ट होके ऊपर नहीं आ सकती। इसलिए दुनिया भर में जितनी भी रेलवेज हैं, जितने भी रेलवे सिस्टम है, उन सब में एक कॉरिडोर ब्लॉक का सिस्टम लगा होता है। यानी 24 घंटे में से 8 घंटे ज्यादातर देशों में, कई देशों में 4 घंटे और कई देशों में 6 घंटे मिनिमम रेलवे के पटरियों को खाली रखते हैं, जिससे कि उसको मेंटेन कर सके। वहां पे मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो जब कॉरिडोर ब्लॉक बनाना होता है, यानी एक कॉरिडोर को 125 किलोमीटर्स के एक कॉरिडोर को आपको खाली रखना पड़ता है मेंटेनेंस के हिसाब से, तब उसमें से जो भी गाड़ी पास हो रही थी उस टाइम में पुराने टाइम टेबल के हिसाब से, उस गाड़ी को वहां पे रोकना संभव नहीं होता है, उसको निकाल देना पड़ता है उस 125 किलोमीटर के। ये प्रक्रिया अगर आप देखें 2014 से पहले, माननीय सभापति जी, बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स होते थे, 170 के आसपास एवरेज, क्योंकि मेंटेनेंस की बड़ी समस्याएं थी। तो ये बहुत एक कड़ा फैसला लिया गया था आईआईटी बॉम्बे के हेल्प से। उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की थी पूरे देश भर के नेटवर्क की, जिससे कि पूरे देश में कम से कम 3 घंटे के हर एक सेक्शन को रेगुलरली 3-3 घंटे के कॉरिडोर मेंटेनेंस के लिए मिल जाए। उसी प्रक्रिया में कई स्टॉपेजेस रोके गए और यथासंभव टाइम टेबल जैसे जैसे रेलवे की कैपेसिटी बढ़ रही है, यथासंभव नए स्टॉपेजेस भी दिए जा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री की बातों से मैं सहमत नहीं हूं। अभी उन्होंने जो कोशिश कीजिए। उन्होंने जो जवाब दिया है, लिखित जवाब दिया है कि 8 जोड़ी ट्रेनें उस पर जाती है, रुकती है, राजधानी भी जाती है। हमने एक्सप्रेस के बारे में पूछा और आपको बताऊं कि 10 बार मैंने माननीय मंत्री जी को मौखिक रूप से और पत्र के माध्यम से, और जो बात ये बोल रहे हैं, जो अफसर इनको सिखाए हैं वही बात बोल रहे हैं। मैं दूसरा सप्लीमेंट्री पूछता हूं, क्या नहीं, माननीय सदस्य, क्या माननीय मंत्री जी अफसर रह चुके हैं? हाँ, अफसर रह चुके हैं। मैं अफसर के रूप में नहीं जानता हूं, मैं मंत्री के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में जानता हूं, और इनसे मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत ही अच्छा संबंध है। दूसरा सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी से, क्या 1.5 महीने पहले बेगूसराय जिले में और समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी स्टेशन पर आपने बेगूसराय में 6 जोड़ी ट्रेन रोकने का आदेश दिया है और रुक रही है, और शाहपुर पटोरी स्टेशन पर 3 जोड़ी ट्रेन रुक रही है 1.5 महीना पहले से? क्या कारण है कि कर्पूरी ग्राम में जो ट्रेनें रुकती थी वो नहीं रुक रही है, और नहीं रुकने का कारण जो आपने बताया उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपसे सभापति महोदय विशेष अनुरोध के साथ, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, आरजू के साथ, विनती के साथ कि जनता को और सरकार को जो लाभ होने वाला है उस लाभ से आप वंचित मत करें, और उस स्टेशन पर आप जो ट्रेन का नाम मैंने लिया है उस ट्रेन को रोकने का आदेश आज करने का कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी, पर सभापति माननीय सदस्य ने बहुत भावुक रूप से, पुरजोर तरीके से, संयम रखते हुए, आपके संबंधों की चर्चा करते हुए बात कही है। मैं मान्यवर सांसद जी, आप बहुत ही मेरे सम्मानीय सांसद जी हैं, और पहले जब इधर बैठते थे काफी अच्छी गपशप भी होती थी, खूब आनंद भी आता था, और जिस तरह की आप पहले बातें सुनाते थे बिहार की राजनीति की, उससे सीखने को भी बहुत मिला। और आपके इन्हीं सब आपके प्रवचनों के कारण ही आज मुझे थोड़ी बहुत राजनीति की समझ आई, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ और माननीय सांसद महोदय का जो स्पेसिफिक विषय है, मैं माननीय सांसद महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा बैठे साथ, और जो यथासंभव इसमें हो पाएगा वो करेंगे।
थर्ड सप्लीमेंट्री श्री जवाहर सरकार. Sub question. How many halts and railway stations are not covered after COVID? After COVID, you withdrew services from many stations. Now, 3-4 years later, I'm asking specifically which stations and halts are deprived of railway stoppage. That's all. Honorable Minister. As I said, there is absolutely no relation with the COVID of this decision. The entire decision was based purely on the maintenance requirements, purely on safety requirements. And for safety, certain very difficult decisions have to be taken. This is one of those difficult decisions which has been taken. We know this has huge implication in terms of passenger convenience and all, but still this was a very important decision which had to be taken. This has nothing to do with COVID, Honorable Chairman, sir. And overall, practically every week things change as more and more tracks are added. As you would be aware, Honorable Chairman, sir, through you, I would like to let the entire House know, in the last 9 years, close to 21,000 kilometers of new tracks have been added. So once capacity is there, enough more trains can be run. That is the way we are moving in this direction. Modi ji's vision for railway is very big vision, and he is implementing it in a very meticulous way. So as more capacity increases, we can have more stoppages. Shri Rajiv Shukla. श्री राजीव शुक्ला. धन्यवाद चेयरमैन साहब. ये सर बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा हो. कौन सी? कोई ट्रेन शुरू होती है, पहले तय होता है कि ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, सुपर फास्ट है, ये है वो है. बाद में धीरे धीरे उसके हाल्ट स्टेशन बढ़ते जाते हैं. अल्टीमेटली वो जो है 20 स्टेशन उसके बीच के रास्ते हो जाते हैं और ट्रेन बेकार हो जाती है. किसी जमाने की तूफान मेल आपको याद है कि आज सबसे ज्यादा खड़खड़िया गाड़ी हो गई है. इसी तरह सुपर फास्ट ट्रेन के साथ भी हो रहा कि पॉलिटिकल प्रेशर में या किस प्रेशर में उनके स्टेशन के जो स्टॉपेज है बढ़ते चले जाते हैं, हाल्ट स्टेशन. मेरा मंत्री से निवेदन है, क्यों ना इस पे एक आप नीति बनाए, एक प्रोविजन बनाए, उस आधार पे सिर्फ ये तय हो. ये जो है कि किसी ने कहा रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर की रिक्वेस्ट, एमपी की रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट, आप उसका स्टेशन बढ़ा देते हैं, रुकने के स्टॉपेज, हाल्ट स्टेशन. ये पूरे देश की समस्या है और इसकी वजह से ट्रेनों को जो द्रुत गति से चलना चाहिए, फास्ट स्पीड से वो नहीं चल पाती और इनको भी शिकायत नहीं होती, रामनाथ जी को भी. अगर इसकी कोई पॉलिसी प्रोविजन हो तो दिक्कत ना है. इसलिए ट्रेनों की आवाजाही, उनके रुकने की पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? माननीय मंत्री, माननीय सभापति महोदय, ट्रेन्स के हॉल्ट की और जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से एक बहुत ही एकदम क्लियरली लेड आउट पॉलिसी और क्लियरली लेड आउट टेक्निकल पैरामीटर्स पे चलती है. जो माननीय सांसद महोदय का जिस तरह से आता है रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार राजीव जी जमीन पे जाएंगे तो रिक्वेस्ट तो आते जाएंगे, लेकिन होता पॉलिसी के हिसाब से. Sir, can I make a small point for Rajiv? My good friend Rajiv, with your permission. sir, you have problem with your friends. You have problem from your friends. Go ahead. Just two small submissions. एक तो राजीव जी से पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट कब ट्रेन में गए थे वो, और दूसरा सर उनसे मेरा अनुरोध है बताएं कि उन्होंने तय कर लिया है कि आज के बाद कभी लोकसभा में ना उनको जीतना है ना उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को जीतना है. अगर ऐसा तय कर लिया है तो जरा हमें भी थोड़ा जानकारी दे. I have a problem. 1 second. I have a problem. I can ask the minister to respond to a question of a member. I can't ask the member to reply to a question of another member. मैं 15 एक तो इनके सवाल का जवाब आर गिरिराजन. पहले तो ये कि 15 दिन पहले मैं ट्रेन श्री आर गिरिराजन, या आप क्या Thank you, sir. आपस का मामला है. Thank you, sir. My request is, so many electrical motor trains has been dropped from Chennai Central to Chennai Park to Dindivanam in the time of COVID, because Chennai has developing up to that level, Dindivanam up to Dindivanam, because
in between Dindivaram to Chennai Park, SRM college is there. So many times minister has visited there. Apart from that, Melmaruthur, one temple city is there. Lot of colleges there. Only, therefore, we need continuously electrical motor units operation from Chennai Park to up to Dindivaram. This is my request. Kindly consider the minister. Honorable Minister. Question is very specific about a particular section of the Indian Railways. We can definitely discuss it as and when honorable member decides to come and meet me. Question number 63, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik. Honorable Minister. रखो Question number, oh, yes, I have. Yes. Again. I got them. I got afraid of them suddenly. The honorable member was not present. Shri Saket Gokhale. Supplementary on question number 63. Sir, first of all, I would like to express gratitude to you because we saw you today protecting a member and actually asking a question to the minister. So I would like to express my heartfelt gratitude to you for the way you protected the member. So through you, my question to the honorable minister is, a lot of states, especially during COVID-19 and even after that, have rejected dal and other grains that have come under the PMGKMY Yojana. So through you, I would like to ask the minister that what were the reasons for states rejecting food grains that have come under this Yojana, and what steps have been taken to ensure that high quality of food is now being supplied to different states under this scheme, sir? Thank you. Honorable Minister. माननीय Any incident of rejection of dal because we don't supply dal under PMGKY. No, there is no such incident that is reported to us that states have rejected the food grains. In fact, most states they are themselves procuring the food grains and distributing it in their states. I think the honorable member may kindly place some specific incident where there is a rejection of dal or whatever food grain is claiming to have been rejected. If at all there is any misdemeanor at the fair price shop level, certainly the state government should investigate that. But no incident of FCI sending any material which has got rejected is currently available with us. If he gives us some specific details, we can respond to it. If there is an instance with the honorable member, he'll share with the leader of the house. Tamil Nadu is one example. What had happened was after food grains were rejected, they went to NAFED, they instituted a committee, and NAFED after that changed the procurement process where out of 100% that is given by millers, 70% is taken and the OTR lower limit was removed, which is why I would request the honorable leader of the house to kindly let the minister's jurisdiction it is to respond, because he does not seem to be aware of the facts. I strongly rebut what has been said by the honorable member through you, sir. And I would like him to place that on the record on the table of the house, since he's made a very grave allegation against a very reputed organization. Please place the details on the floor of the house. One second. Honorable member, 1 second. Take your seat. One second, honorable member. Please take your seat. Honorable member has put in firm perspective an assertion which has been disputed by the leader of the house. The honorable member may put it on the table of the house. We'll examine it and take it next. Shri Tiruchi Shiva. I take note of both, and every document which I call upon to be put on the table of the house is seriously examined.
Shri Tiruchi Siva. Thank you, Chairman, sir. Sir, keeping in view of the welfare of the beneficiaries of PMGK, the Government of India decided to continue to provide food grants to 81.35 crore beneficiaries with an outlay of 11.8 lakh crores, sir. Very much appreciable. And the whole subsidy is borne by the Government of India. My simple question is, why after all this, in the global hunger index, India ranks 111th out of the 125 countries? Thank you. Sir, Chairman, sir, while this is not directly related to the question, but I'm happy to share with the honorable member that the Global Hunger Index has not at all spoken about hunger being the cause of any death or there being any people who are hungry in India. In fact, I have been writing from all the states, including the state of Tamil Nadu, that there is no starvation death in their state thanks to the sufficient availability of food grains in the country. Our Annadatas really need to be complimented, and you are a Kisan Putra yourself, for the fantastic increase in production in the last 9-10 years. We are one of the few countries in the world where production has gone up significantly. And thanks to the 81.35 crore poor and lower middle class people who get free food grains. The hunger index takes into account certain factors which have been wholly rejected by the government of India. They have certain ways of calculating stunting and malnutrition which have been rejected by the government of India, rejected by India because those pertain to Western standards and not to India. well, all I can say with confidence, and I'm sure the House will agree, our hunger index for power is perhaps highest in the world. Am I right? Yes, it is there. It seems I am not intelligible. Yes. Dr. Fozia Khan, last supplementary on this question. Sir, the minister just mentioned I can ask three about stunting and other things. So I would like to ask him, 200 million malnourished people are there in India, which involve factors like poverty, lack of proper nutrients in their food, access to clean water, poor sanitation, etc., sir. Despite the evident link between food insecurity and malnutrition, it has rarely been investigated. I would like to ask the minister, how do schemes like PMGKY address malnourishment in this context? Because he just said that dal we don't distribute. So why can't we include such nutrients? Honorable Minister. Today, PMGKY is possibly the world's largest outlay that has ever been embarked anywhere in the world on free food grains to ensure that no child sleeps hungry and all the poor get free food grains. 81 crore people are benefiting from that, fully funded by the government of India. Whether you want to give dal or other products, the different states are free to decide on their own and have their own schemes. Government of India has had an outlay of 11.8 lakh crores on PMGKY. As regards poverty, 13 crore people have come out of poverty in the 5-year period. The report has just come out recently. I think I would urge the honorable member to introspect what their party, what their government for so many years did that has caused this situation in the country today. Why are we in a situation where we have people who are still malnourished or are not getting adequate nourishment or protein? Is something that a government of which she and her party leaders were a part for over 55 years have to introspect that what did they do for all these years that the country has come to this state of affairs, and how in a short period of 9 years the country has transformed itself so that across the country nowhere there is shortage of food grain, nowhere are people dying of hunger. In any case, the malnutrition statistics are based on parameters which have been rejected by the government because they do not apply to the people of India, to the demographic profile of the people of India. Question number 64.
Shri Harbhajan Singh, honorable members, on every question, I get number of supplementary requests. But I, as per practice, can handle only 3. Therefore, and I take them as far as possible serially. But if they all happen from a same political party, I slightly deviate to make it little more representative. Thank you. Shri Harbhajan Singh, Honorable Minister. सभा पटल पर रख दिया गया. Dr. Ami Yaznik, first. Sir, I want to ask a question to the minister that given the situation and the state of electrification in rural areas, which is still a challenge, far off rural areas, what steps are being taken by the ministry to see that the farmers at that far end get an uninterrupted power supply so that they can come out with their products and their produce? So where is the question of, where is the data where they can say that there is rural electrification to the farmers? Because the question involves electric tractors. So I had to first ask this question in order to know that So electric tractors will come later. If What there's is your question? Yes, so where is the uninterrupted power that is required by the farmers? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने विद्युत की और किसान से बात की है, किसान से संबंधित विद्युत वैसे कृषि राज्य का विषय होता है, लेकिन भारत सरकार की ओर से किसानों को नई से नई टेक्नोलॉजी मिले, चाहे वो सोलर ऊर्जा के माध्यम से हो या बैटरी के सिस्टम से हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जैसा कि मैं स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के अंदर भी कहा गया ट्रैक्टर के विषय पर कि बैटरी से ट्रैक्टर चले या उसको कब परमिशन का विषय है, तो मुझे इसमें ये जरूर कहना है कि हमारी सरकार का ये विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि किसानों को नई से नई तकनीकी भी मिले और इलेक्ट्रिक से भी उनको कम उपयोग के साथ हम उसको किसान को सुविधा दे सके. मुझे इसमें आपसे ये बताना है कि जैसा कि किसानों को जिस तरह से आज एक ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की हमारी, जिसमें हमारी बहनों को भी उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी गांव के अंदर कैसे पहुंचे और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज 15,000 हमारी बहनों को ड्रोन के साथ ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन करके वो अपने गांव के अंदर वहां पर करेगी और ड्रोन के अंदर उनको सब्सिडी का भी 80% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है और लगभग हम इसमें 1261-60 करोड़ रुपए का भी इसमें प्रावधान किया गया है. तो कुल मिलाकर यह कि नई टेक्नोलॉजी भी मिले और गांव के अंदर हम उस सारी समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके ऊपर लगातार सरकार की ओर से किसानों को तकनीकी उपलब्ध करवाएं, इसके ऊपर सरकार का प्रयास है. और रही बात इलेक्ट्रिक की, तो उसके लिए भी आपको पता होगा कि आज गांवों के अंदर पहले की क्या स्थिति थी, अभी क्या है. देखो आज दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गांव तक लाइट पहुंचाने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारी सरकार ने किया है, गांवों के अंदर लाइटें पहुंची. वरना पहले ये स्थिति थी कि गांवों के अंदर लाइट भी नहीं होती थी, बहुत कम गांवों के अंदर लाइटें उपलब्ध होती थी. तो मैं ये कह सकता हूं कि गांवों के अंदर ऊर्जा का भी संचार गांव तक पहुंचे और नई तकनीकी भी पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है. डॉक्टर फौजिया खान. Thank you, sir. Sir, considering the challenges in electrifying farm vehicles in India, particularly the issues with charging infrastructure, with durability, with reliability, along with the diverse range of heavy-duty machinery used in agriculture, especially for family farms in developing regions, and given the major farm vehicle manufacturers cater to global markets, making international developments impactful on product offerings, sir, has the ministry developed a strategy to promote the holistic development of electrification initiatives for tractors in the country, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति जी, हम पहले कभी दूसरे देशों के अंदर जाते थे तो वहां पर किसानों को अत्याधुनिक यंत्र देखने को मिलते थे, जैसा कि चाहे ड्रोन हो, चाहे दूसरे एपिशेडर है, रोटावेटर है, ये दूसरे देशों के अंदर जाते तब देखने को मिलते थे. लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद में ऐसे कई प्रयास किए जिसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि जब
2014 से पहले 10 साल के अंदर जो लगभग उस समय इसके ऊपर जो एक खर्चा हुआ था वो 163 करोड़ रुपए खर्च हुआ था 10 साल में। लेकिन अभी हमने जो खर्च किया इसके ऊपर वो है 6,415 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए हैं। और मैं इसमें ये भी बताऊं कि पहले जो इक्विपमेंट जो मशीनरीज थी, 10 साल का फिगर बता रहा हूं, 10 साल के अंदर 10 लाख मशीनों का वितरण सरकार के द्वारा हुआ था। लेकिन हमने जो इन 10 सालों के अंदर 9 साल के अंदर जो वितरण किया है वो लगभग 35 लाख मशीनों का वितरण किया गया, जो 4 गुना अधिक है वहां उससे। और इसके साथ ही हमने हायरिंग सेंटर 23,472 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले हैं। इसी तरह से गांवों के अंदर हाईटेक हब स्थापित करने के लिए 405 हाईटेक हब स्थापित किए हैं। ऐसे फार्म मशीनरी बैंक भी 20,000 से अधिक हमने वहां पर गांवों के अंदर पहुंचाई है। और इसके लिए जैसा कि प्रदर्शन है, गांवों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करके नए ट्रैक्टर है या नई दूसरी इक्विपमेंट है वो किसान के गांव तक पहुंचे, उनको अत्याधुनिक कैसे पहुंचे, इसके ऊपर लगातार प्रयास करके 70,000 से अधिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किए। तो ये मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से सरकार की ओर से नई तकनीकी गांवों के अंदर पहुंचे, नए नए इक्विपमेंट उपकरण किसानों तक पहुंचे, इसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया है। और उसी का ये पार्ट है जो पहली बार देश के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को परमिशन भारत सरकार ने दी है। पहले देश के अंदर परमिशन ही नहीं थी, किसान ड्रोन से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का छिड़काव कर ही नहीं सकता था, इसकी अनुमति नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश के अंदर ड्रोन की स्वीकृति हमारे देश के अंदर किसानों को दी, और आज वो ड्रोन का उपयोग किसान, देश के किसान है वो करेगा। जब कभी विदेश में जाता था तब ये देखने को मिलता था, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा। श्री गुलाम अली। थैंक यू चेयरमैन सर। जम्मू कश्मीर भी इस हाउस से बहुत कुछ चाहता है। शुक्रिया, आपने हमें क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए टाइम दिया। सभी जम्मू कश्मीर में पहले अमन नहीं था, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में वहां अमन आया है। और अब अवाम के जो मसले हैं कैलेंडर के बजाय खेत के हैं, इस तरह के जम्मू और कश्मीर का जो रोड है वो अक्सर बंद रहता है। पर कश्मीर का जो सेब उगाने वाला है, जहाँ जो बाकी अनाज के, वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ करा है, जीआई टैक्स दिए हैं, राजमा को दिया है, बासमती को दिया है, कश्मीर के केसर के उसको, और बहुत सारी पंप्स लगाए हैं। बहुत आपका प्रश्न, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्रूट जो है उनकी स्टोरेज के लिए, जहाँ कश्मीर में अनाज स्टोरेज के लिए कोई सरकार का ऐसा प्लान है कि स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए नौजवानों को वो बड़े बड़े गोदाम बनाए स्टोरेज के लिए, डीप फ्रीजर बड़े बड़े, ऐसा कोई प्लान है जहाँ कुछ बनाए हैं? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, किसानों के जो भी समस्याएं, चाहे उसके स्टोरेज की समस्या है या उनके अन्य प्रकार की समस्या है, तो उनके लिए भारत सरकार ने स्टोरेज के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया है। MIDH स्कीम के अंदर भी इसका प्रावधान है, जिसमें वो अगर गांव के अंदर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है या जहां भी वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि उसमें 2 करोड़ रुपए तक का अगर कोई किसान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस या सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट भी अगर गांव में लगाना चाहता है तो उसमें 2 करोड़ का प्रावधान है। और उसमें 3% ब्याज की छूट का भी प्रावधान किया गया है, ताकि, और उसमें बिना कोई कोलेटरल के उसको पैसा किसान को मिलता है, जिसमें कोई प्रकार का उसको डॉक्यूमेंट्स गिरवी नहीं रखना पड़ता। और इसके साथ ही उसके अंदर सब्सिडी का भी प्रावधान है। वो MIDS की स्कीम जो है उसमें 40% की सब्सिडी है या 35% की जो सब्सिडी है, और उसके अंदर भी अगर उससे लेना चाहता है तो दोनों को क्लब भी किया गया है। उस स्कीम से सब्सिडी ले सकता है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से वो उससे ऋण भी ले सकता है। तो ये दोनों को क्लब करके बनाएगा, जिसका पूरे देश के अंदर भी लाभ हो रहा है। और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे कई प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, जिसमें आपके केसर, सैफरॉन का भी बड़ा एक पार्क वहां पर लगा है।
और सेव के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का आपने जिक्र किया, तो हमने किसान रेल के माध्यम से भी इस पूरे देश के अंदर किसान रेलें भी चलाई ताकि हम उसको अधिक से अधिक लाभ दे सके। तो इसके लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। Question number 65, Sri Prabhakar Reddy, Vemi Reddy. Honorable Minister. उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। Anil Prasad Hegde. आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सच है कि भारत का सीड मार्केट में जो बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वह पिंक बोलवर्म के लिए रेसिस्टेंट है और मॉन्सेंटो बेयर जैसे बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बीज कंपनियां पिंक बोलवर्म इन्फेस्टेशन के कारण किसानों को हुई नुकसान का भरपाई करने किसानों को कितना पैसा देकर कंपेंसेट किया और कौन कौन सा प्रदेश सरकारों ने किसानों को इस बात के लिए कंपेंसेट किया? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, पिंक बॉलवर्म की जो बात माननीय सदस्य ने की है, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये प्रयास किया है कि उसके अंदर नई वैरायटियां भी हमने तैयार की है। आईसीआर लगातार इसमें प्रयास करके कई वैरायटियां भी तैयार की है। और उसके बाद में जो इन्होंने सवाल का जो प्रश्न पूछा है कि उसकी भविष्य में किस तरह से इसका समाधान भी हो, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि ये पिंक बॉलवर्म में जिसकी वजह ये है कि लास्ट के अंदर जब बरसात हो, जुलाई के अंदर जब बरसात भी आती है उसी समय ये आता है, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो उसके अंदर रहती है लगभग 4 महीने, और ये 3-3.5 महीने रहती है और 4 महीने होती है। तो इसलिए इसकी समस्या ये सामने आती है, वो लास्ट में आती है। लेकिन इसके लिए हमने वैरायटियां हैं वो बिल्कुल आईसीआर की तरफ से लगातार प्रयास करके की जा रही है, तैयार। Sri V. Vijay Reddy. Sir, thank you very much, Chairman. Sir, sir, this PB knot technology which is being tested in Kurnool, district of Andhra Pradesh, and which is tested to effectively kill pink bollworm, whether the government of India have got the plans to plan of action to provide, and if at all there are plans to implement to distribute it, then the minister may, honorable minister may provide the details. Sir. Honorable Minister. सभापति जी, इसके अंदर मैंने जैसा पहले कहा कि कुछ तो हमने वैरायटियां तैयार की है और उसके साथ ही किसानों को एडवाइजरी भी हम जारी करते हैं, और इसी का परिणाम है कि एडवाइजरी जारी करके और उनको बताया भी जाता है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो 2017-18 के अंदर जो थे लगभग 30% ये पिंक बॉलवर्म की बीमारी की वजह से फसल का नुकसान होता था, जो अब लगभग घटकर सिर्फ 10% रह गया है। यानी कि 30% हमने कटौती इसकी माध्यम से की है कि हमारे जो किसान साइंटिस्ट है वो वहां पर जाकर डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, और जो एडवाइजरी किसान जो हमारे साइंटिस्ट जारी करते हैं उसके अनुसार अगर किसान उसका सीड का जो फर्टिलाइजर का छिड़काव समय पर अगर करते हैं तो उसमें किसान का बचाव जरूर होता है। और ये सारी जानकारियां देने की वजह से 20% की कमी आई है। आगे हमारा लगातार ये प्रयास है कि इसमें भी कटौती आए, लेकिन क्या है कि ये कोई भी अगर पौधा है तो उसमें बीमारी तो स्वतः कहीं न कहीं से आती है, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि उसकी कैसे उसका समाधान हो। तो इसके लिए निश्चित रूप से वैरायटियां भी है, और जो इसका पेस्टिसाइड की है वो भी नई नई तरीके से लाके उनको समाधान करें, इसके ऊपर सरकार के लगातार कार्य चालू है। Question number 66, Sri Shakti Singh Gohil, not present. Honorable Minister. Sri Biplab Kumar Dev. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। जो रेलवे ओवरब्रिज का जो प्रस्ताव त्रिपुरा सरकार की तरफ से दिया गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो किस लिए नहीं हुई? ऐसे में ये प्रश्न उसके थोड़ा सा दूर है। मैं मंत्री जी से थोड़ा आश्वासन चाहता हूँ। धन्यवाद।
Honorable Minister. चेयरमैन सर, रेलवे के जो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस हैं, उसमें जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में काम हुआ है, वो काम एक हिस्टोरिक काम है। अगर हम 2004 से 2014 का पीरियड देखें, तो 2004 से 2014 के बीच में कुल मिला के 4,148 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने थे। और 2014 से 2023 का जो पीरियड है, इसमें देखें तो 4,000 पुराना जो था, उसके कंपैरिजन में माननीय सभापति महोदय 10,867 यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस को बनाने के लिए कई तरह के रिफॉर्म्स भी किए गए, एक्स्ट्रा फंड सैंक्शन किए गए, करीब 80 के आसपास स्टैंडर्ड अलाइनमेंट्स बनाए गए, जिससे कि 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 90 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, हर तरह के अलाइनमेंट के लिए स्टैंडर्ड डिजाइन्स और स्टैंडर्ड ड्राइंग्स बनी है, जिसके कारण आज प्रैक्टिकली बहुत ही कम टाइम में सारे अप्रूवल्स हो जाते हैं। और इसके अलावा जहां पर भी लेवल क्रॉसिंग गेट है और लेवल क्रॉसिंग गेट के बाहर भी जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेते हुए भी रेलवे का जो प्रशासन है वो उसमें फैसले करते हैं। माननीय सांसद महोदय ने जो त्रिपुरा के विषय में प्रश्न रखा, मैं माननीय सांसद महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा, इनवाइट करूंगा कि आके बैठे और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करें। He has missed the bus. Dr. John Britas. Sir, though my question is not directly linked to the original question, since the Honorable Minister is very ebullient and erudite, and also since he spoke about the facilities being extended to the passengers, I would ask a specific question with your indulgence, sir, that since he is vocal about the facilities to the passengers, there are constraints and difficulties that are heaped on the passengers because of discontinuation of the concessions for the senior citizens. And since there is a premium tatkal which has been brought in to fleece the passengers, since conversion of the sleeper and general compartments to AC, so will he review his stand? And also through your good officer, I will extend all my best wishes for his future endeavors. Honorable Chairman Sir. Honorable Minister. Honorable Chairman Sir, first of all, the Honorable very, very erudite member and very, very erudite member and very and senior most member. There may be a caveat from the chair. Yes, sir. So, not on your intellect, on his direction only. Go ahead. So, honorable member could not ask a question. He has made some comments which are very misleading comments, and I fully respect all the points that he has made. If he has any specific questions which is related to the particular question right now being discussed, definitely he is most welcome to come and discuss any particular ROB or RUB, flyover or underpass in Kerala or his area, so that we can discuss and find a solution to it. Before that, he has missed the bus but not plane. Okay, 1 second. Sir, now this is the second instance. No, but he will not have enough time. Second instance in one day. 30 seconds. That a member shoots and scoots. This is the second instance. First I had the case of Dal. Now we have the case. So this, what will be the, I want a ruling, what will happen to a member who makes false allegations or just sensationalizes an issue to try and draw attention to which is something which is not factual. If found so, what action will be taken against such a member? But, Honorable Minister. Sir, Honorable Chairman, sir, this is a matter of great importance. This is matter of great importance. If any honorable member, in the garb of asking a question,
is plainly making allegations which are baseless, absolutely false, have absolutely no direction, then what should be the treatment, what should be punishment to that particular honorable member? Let me tell you, Honorable Chairman. and let me take the House in confidence. One second. No. I look into all aspects. Honorable members. Yes. One second. Mr. Shakti Singh Goyal. सर मेरा आज सिर्फ छोटा सा सवाल आपके जरिए यही है कि ये ब्रिज काफी लंबे अरसे से बन रहा है, उसकी टाइम लिमिट क्या थी और अभी तक खत्म नहीं किया है आरएनबी डिपार्टमेंट ने, ऑनरेबल तो क्या मिनिस्टर, पेनल्टी? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, इस ब्रिज के अप्रोच रोड पे काम चल रहा है अभी, गर्डर इसका फैब्रिकेशन हो रहा है, इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इसमें कुछ शुरू में दिक्कतें आई थी। शक्ति सिंह जी जानना चाहते हैं कि आप शक्ति का उपयोग कर गति शक्ति का उपयोग कर ये कब तक पूरा कर देंगे, ये जानना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी कर देंगे, जल्दी से जल्दी। ये 3-4 साल से ब्रिज का काम चल रहा है। The House will meet at 2 p.m. today. Act. A bill passed by both houses of Parliament and assented to by the President. Adjournment of the sitting of the House. Termination of the sitting of the House, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha. भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है।
The special session of Parliament commenced with a very important message from Chairman of Rajya Sabha. Honorable members, use of wit, humor, sarcasm, and even acerbic comments inside Parliament are important, inalienable facet of a vigorous democracy. These days, we don't get to hear such light-hearted exchanges. Hopefully, we'll see the revival of wit, humor, and scholarly debates. Lighter moments were witnessed during the special session as Chairman sought to use laughter as the best medicine in the House. If you want to address the chair, you can gentlemanly rise and make your point. Not in a cozy chair like this. One second. No. Honorable, one second. Leader of the opposition. Honorable leader of the opposition. और उसके पहले मैं खड़गे जी आपसे एक बात कहूंगा कि जो मैंने विट ह्यूमर की बात की है उसमें आप पर लागू नहीं है. आपने विट भी दिखाया है, ह्यूमर भी दिखाया है, सरकाज़म भी दिखाया है. वो बात मैंने बातों के लिए कही थी. मैं ये सोच के आया था क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा. मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और किसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे. ये उम्मीद से मैं आया था. यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है. It is 261st session, special session. Then came the much-awaited historic move of shifting the entire parliamentary system from Samvidhan Sadan to the Parliament House of India.